here I have created a prompt where what I am basically doing, I have created a prompt where I am saying that you are an AI ML educator who explains AI and developer tools and concept very clearly. Okay. दूसरा टास्क क्या मैंने उसको बोला, एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू अ स्टूडेंट हु इज लर्निंग फॉर फर्स्ट टाइम. ओके, दिस इज द टास्क टू द एलएलएम. ऑडियंस कैसे होंगे? ओके, सो इफ यू सी इन द रेड मार्क, दीज आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स एज इन दैट दिस कुड बी चेंज्ड इन फर्दर. लाइक कभी मैं हो सकता है जेनीआई के बारे के टॉपिक के बारे में पूछूं, कभी मैं एलएलएम्स के बारे में पूछूं, कभी मैं वेक्टर एम्बेडिंग्स के बारे में पूछूं. ऐसे टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं. सिमिलरली, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन? Start with the short definition of a main content, give a small example to understand, okay, explain why the concept matters and how it is used, and end with the brief summary with one or two sentence. So this is the instruction I wanted to give to the LLM कि मेरा आप जो भी आउटपुट दोगे, जो भी रिस्पॉन्स दोगे, it should be in this particular format. Okay. Similarly, we have constraint that कोई एडवांस जार्गन मत यूज करो. लेट्स सपोज अगर कोई पहली बार पहले टाइम के लिए पढ़ रहा है कोई चीज़ को और मैं उसमें बहुत ही एडवांस जार्गन्स यूज करूँ, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड. करेक्ट. सो फॉर दैट cases, don't use any advanced jargon and do not assume that you have a prior knowledge. Okay, so basically हम लोग ये मान लें कि स्कूल बेस्ड कोई प्रायर नॉलेज नहीं है सामने वाला को जिसे मैं सिखा रहा हूँ. ठीक है. And the output format, that how I want all those topic to be split in subsections. हर सबसेक्शन को पाइथन लैंग्वेज से एक कोड स्निपेट दे दे, बुलेट पॉइंट्स पर मुझे डेटा दे. ठीक है. So I have added all these output format things. Okay, so to let's start with the prompt template, that how how we are going to use this prompt templates, and इस prompt templates के different attributes क्या हैं. Okay, so if you could see, this particular prompt template belongs to the library called Langchain. Okay, so अगर मान लेते हैं अगर आपको Langchain इंस्टॉल करना है, here you could write exclamation mark pip install Langchain. Okay, so if you do it like this, here you could see that it could install your Langchain. Okay, right now my kernel is not started, so that it is taking some time to start. Okay, let it happen. Okay, similarly, if you see that I have already created a prompt. Okay, I have created a prompt template and keep it inside these three quotes. Okay, so अगर मान लेते हैं आपको मल्टी इनलाइन चीज़ें लिखनी है, प्रॉम्प्ट्स लिखना है, तो यू हैव टू कीप इट इन दिस पर्टिकुलर थ्री कोड्स. ओके, एंड देन आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉम्प्ट. तो इफ यू कुड सी, ओके, दिस इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि मतलब Langchain ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. That is why it is saying requirement already satisfied. Okay, let's see. So what I am doing, I am just creating a prompt and saying that use the class prompt template, और उस prompt template का एक method है that is called PromptTemplate, and I am just putting the prompt. Okay, and then there is another method you say or a function you say which is used to map the variables. So if you see here, this particular topic, audience, language, okay, these are input variables or these variables can change over time. Okay, let's suppose जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि मुझे यही सेम प्रॉम्प्ट चाहिए वेक्टर एम्बेडिंग्स के बारे में पढ़ने के लिए, यही सेम प्रॉम्प्ट चाहिए एलएलएम्स के बारे में पढ़ने के लिए. ओके, सो ये टॉपिक चेंज हो सकता है, ऑडियंस चेंज हो सकता है मैं किसी बिगिनर को सिखा रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी एडवांस को सिखा रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी इंटरमीडिएट स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ. So this can change, and this language is basically is for do you want it to learn in Python based, or that is what I meant language here. Okay, so if you see here, this particular prompt dot format, okay, if you see dot format is used to map those input variables. जैसे मैं अगर डॉट फॉर्मेट यूज करूं तो मैं अगर ये बोलूं कि टॉपिक, जहां जहां टॉपिक है वहां पे तुम क्या कर दो, जेनेआई डाल दो, जहां जहां लैंग्वेज है वहां पे क्या डाल दो, पाइथन डाल दो. और अगर मैं इसको इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कराऊं, लेट्स सपोज आई एम जस्ट प्रिंटिंग दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स. ओके, so if I print this response, if you could see that everything is same, only जहां जहां मैंने टॉपिक बोला वहां पे जेनेआई आ गया, जहां मैंने बेसिकली लैंग्वेज दिया था वहां पाइथन आ गया. करेक्ट, पाइथन लैंग्वेज आ गया. एंड बेसिकली फॉर ऑडियंस वी हैवंट पुट एनीथिंग. ओके, ओके,
Let's go down and then we'll understand what are the different attributes of prompt template. The first attribute of a prompt template is input variable. Input variable is basically that I have already mentioned that कि कई बार ऐसा होगा कि आपके प्रॉम्प्ट में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेंज होंगी जो जिसे आप डायनेमिक रखना चाहोगे, या जैसे मेरे केस में दैट इज टॉपिक, ओके, दैट इज डायनेमिक. सो ऐसे जो भी वेरिएबल्स जो चेंज होंगे ओवर टाइम, ओवर यूसेज, ओके, फॉर दैट वी विल यूज दिस पर्टिकुलर इनपुट वेरिएबल. सेकेंड एट्रीब्यूट विच वी हैव इज टेम्पलेट. अब जैसे मुझे एक एक्चुअल प्रॉम्प्ट बनाने से पहले मुझे एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा. कि मान लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे टेम्पलेट बनाया था, दिस टेम्पलेट वेयर व्हाट आई हैव डिड, आई हैव क्रिएटेड टेम्पलेट दैट ये टेम्पलेट में हर बार कोई टॉपिक को पढ़ाने के लिए कुछ अगर मुझे जनरेट कराना है एलएलएम से, सो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट. ओके, सॉरी. So I will use this particular template. So that is why template is basically, it is not an actual prompt but a structure of a prompt. Okay, that is what we are calling a prompt template. Okay, so if I go down here, you could see that template में basically अपन क्या करने वाले हैं कि we are creating a templates जहाँ पे हम लोग different input variables रखने वाले हैं, different optional variable, उस variables का input types क्या है and partial variable क्या है. Okay, the third part we have is the optional variable. अब let's suppose that आपने कोई particular variable डाला, okay, you put that particular variable but you want that particular variable to be optional. मतलब कि अगर यूजर उसे डाले, यूजर उसको प्रॉम्प्ट में while formatting a prompt डॉट फॉर्मेट करने समय भले उसको यूजर डाले या ना डाले, जैसे यहाँ मैं देख रहे हो मैंने टॉपिक और लैंग्वेज के लिए मैंने डाला बट ऑडियंस के लिए नहीं डाला. ओके, तो ये ओके ऑप्शनल. सो बेसिकली ये दोनों वेरिएबल्स में मुझे कौन सा ऑप्शनल रखना है ये भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि सपोज दो में से कोई एक वेरिएबल इज ऑप्शनल, आप दो या ना दो, आई विल टेक इट एज अ ऑप्शनल. ओके, एंड इनपुट टाइप्स इज बेसिकली दैट आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो उसका एक्चुअल डेटा टाइप क्या है या एक्चुअल इनपुट टाइप क्या है. एंड पार्शियल वेरिएबल आर बेसिकली अ प्लेस होल्डर ऑफ अ डिक्शनरी. जैसे मैं जो भी वेरिएबल्स को मैं ऑप्शनल वेरिएबल बनाऊंगा, करेक्ट, उस वेरिएबल का एक प्लेस होल्डर या प्री डिफाइंड वैल्यू पुट करूंगा पार्शियल वेरिएबल्स में, कि अगर मेरा यूजर उस ऑप्शनल वेरिएबल में कुछ डेटा नहीं भेजता है, आई विल यूज दैट पार्शियल वेरिएबल टू पुट द वैल्यू देयर. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, तो इफ यू सी हियर दैट आई हैव क्रिएटेड अ फॉर्मेट फॉर माई प्रॉम्प्ट. ओके, सो इफ यू सी मैंने टेम्पलेट में प्रॉम्प्ट डाला. प्रॉम्प्ट इज बेसिकली दैट टेम्पलेट. ओके, एंड इनपुट वेरिएबल में मैंने क्या तीन चीज डाला, इनपुट वेरिएबल में मैंने जो तीन चीज डाला दैट इज कॉल्ड टॉपिक, language and audience. There are three different variables जहां पे if you see here, if you scroll little up, यहाँ पे topic, audience and language are three different variables. Okay, if we have three different variables, I'm just minimizing it just a minute. If we have three different variables, okay, if you have three different variables, अब let's suppose for me audience is not important, मतलब मैं किसे पढ़ा रहा हूँ ये मेरे लिए अभी important नहीं है. चाहे मैं ये वीडियो इंस्टाग्राम पे डालूँ या किसी स्कूल के पेज पे डालूँ या यूट्यूब पे डालूँ, ये कोई प्रोफेशनल भी सीख सकता है, कोई स्टूडेंट भी सीख सकता है इससे, और कोई भी लोग सीख सकते हैं. सो लेट्स सपोज फॉर मी ऑडियंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो इफ ऑडियंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल रहा हूँ इन पार्शियल वेरिएबल. इफ आई एम मेकिंग दिस ऑडियंस कि लेट्स सपोज मेरा ये ऑडियंस इज अ ऑप्शनल वर्ड. लेट्स सपोज मैं बोलूँ कि लैंग्वेज इज ऑल्सो ऑप्शनल फॉर मी. ओके, आई एम जस्ट पुटिंग लैंग्वेज एज ऑप्शनल. आई एम पुटिंग लैंग्वेज. अगर मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज ऑप्शनल है तो मुझे एक प्लेस होल्डर पार्शियल वेरिएबल में भी डालना पड़ेगा कि अगर मेरा यूजर एक्सप्लिसिटली डॉट फॉर्मेट करते समय, मतलब प्रॉम्प्ट का फॉर्मेटिंग करने समय अगर ये वेरिएबल नहीं भेजता है
तो आई शुड टेक द डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्शियल वेरिएबल्स एंड मैं इसके प्लेस होल्डर को यूज करके वहां पुट कर लूंगा. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर पार्शियल वेरिएबल्स. ओके, द मेटा डेटा इज बेसिकली कि किससे रिलेटेड है, सोर्स क्या है, वर्जन क्या है इसका. दिस इज वॉट बेसिकली अ प्रॉम्प्ट का मेटा डेटा. एंड this tax is very important. Okay, tax is basically आपको एक प्रॉम्प्ट का कैटेगराइजेशन करने के लिए कि लेट्स सपोज मैंने 5 प्रॉम्प्ट बनाया, 2 प्रॉम्प्ट मेरे टेस्टिंग से रिलेटेड है, 2 प्रॉम्प्ट मेरे डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एक प्रॉम्प्ट मेरे पढ़ाने से रिलेटेड है, या लेट्स सपोज एजुकेशन से रिलेटेड है. So I'm putting all these tags here. Okay, but what we are using this tags, but does it make any sense of using? Yes, it makes lot of sense. I will show you an example where I will show you how these tags are being used. ये tags को हम लोग कैसे use कर रहे हैं to filter our prompts. Okay, मेरे पास इतने सारे prompts हैं मेरे पड़े हुए हैं. I have created many version of my prompt, but I am maintaining these tag to in just order to get a specific or a specific domain related prompt. Okay, लेट्स सपोज अभी तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, कभी हो सकता है मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट हो, या फिनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट हो, या ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट हो. सो वी कैन ऐड दीज टैग्स एंड देन एंड दिस इज मॉडल कॉन्फिग. यू हैव many of you know about this temperature and max token. I'm not going there for now. So let's see what I meant with the tags. And okay, so if you see here that in the final prompt, if I am putting, अगर मैं final prompt में ये put करूँ topic is equal to Gen AI language Python plus beginner student, मैं इसे put करूँ तब भी ये चलेगा and it got printed. और अगर let's suppose if I what I do, let's suppose if I say print final prompt, or I'm not giving this language part. Okay, language and audience को मैंने अभी क्या बनाया है, language and audience को भी मैंने optional variable बनाया. मैं this particular final prompt here could see that while formatting the prompt, जब मैं prompt को format dot format कर रहा हूँ और ये 3 वेरिएबल्स भेज रहा हूँ, जैसे टॉपिक, लैंग्वेज एंड ऑडियंस भेज रहा हूँ, तब तो भी ये चल रहा है. बेसिकली इट इज़ पुटिंग द टॉपिक जेन एआई एंड पाइथन एज लैंग्वेज. ओके, एंड ऑडियंस इज बेसिकली इट इज़ नॉट हेयर, अ बिगनर स्टूडेंट इज नॉट हेयर. सो then also it is running. And let's suppose if I remove it, okay, if I remove it from this particular I just only put the topic, then also it will work. Okay, but for this particular like for this particular Python language, it is taking it from that particular placeholder dictionary or the if you say ये पार्शियल वेरिएबल से ले रहा है, क्योंकि मैं तो एक्सप्लिसिटली कुछ लैंग्वेज में पुट ही नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज के लिए कोई वेरिएबल का वैल्यू पुट ही नहीं कर रहा हूँ. बट इट इन द पार्शियल वेरिएबल वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि अगर कोई कुछ ना दे तो you take it from this particular language.python. Okay, so this is all about prompt template. In the next video we will talk about what is tags and tags of a prompt template and कैसे उसको reuse कर सकते हैं to basically to get our prompts like identify our prompts. Okay, now